ठीक है, and suppose if 2 people or 3 people or any number of people they invest for the same amount of time, then their profit sharing ratio will be equals to their initial investment ratio. अगर दो से ज्यादा 3, 4, 5 लोग अगर सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, then their profit sharing ratio will be equals to their initial investment ratio. ये बात ध्यान में रखेगा. और यही बस एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है, that total investment is initial investment into time period. बस अगर इतनी लाइन आपको याद है, पार्टनरशिप के कोई भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं. A and B started a business by investing 4,000 rupees and 5,000 rupees respectively. Find A's share out of a total profit of 1,800. Now, how you are going to solve this question? See, A and B started a business by investing 4,000 and 5,000, right? So, ratio of their investment is 4:5. Now, if this is their ratio of investment, right, this will also be their profit sharing ratio because both of them are investing for the same amount of time. See, if nothing is given, right, if nothing is being told about the time period for which they are making the investment, by default you will take that everybody is investing for the same amount of time. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ये लोग अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आप क्या लेंगे, दैट एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. सो लेट्स से ए एंड बी दे इन्वेस्टेड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, right? So their profit sharing ratio will be their initial investment ratio. So initial investment ratio is 4:5. This will also be their profit sharing ratio. What this profit sharing ratio 4:5 signifies, that when my total profit was 4 plus 5, 9 rupees. When my total profit was 4 plus 5, 9 rupees, at that time profit received by A was 4 rupees, profit received by B was 5 rupees. So when my total profit was 9 rupees, the share of A was 4 rupees. Right now my total profit is 1,800. So share of A will be X, cross multiply 200. So value of X will be 800. जैसे देखिए, Smith and Kate started a business investing 84,000 and 28,000 respectively. In what ratio the profit earned after 1 year will be divided? See, profit earned after 1 year, that means both are investing for 1 year of time. Time period of investment is same. If time of investment is same, the profit sharing ratio will be initial investment ratio. Initially they are investing 84,000 and कितना 28,000. तो इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है इनका, बताओ भाई. 14 से 7 टाइम्स, 2 टाइम्स 7 रेशियो 3 रेशियो आ रहा है. एटी 4 है ना. अच्छा नहीं, 14 से 7 टाइम्स कैसे जाएगा, 14 से नहीं जाएगा ना. 7 से जाएगा 12 टाइम्स, 7 से जाएगा 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम. करेक्ट, 3:1. ठीक है, 6 टाइम्स जाना था, मैंने 7 टाइम्स कर. P&Q started a business by investing 85,000 and 15,000 respectively. In what ratio the profit earned after 2 years will be divided between P&Q? Profit earned after 2 years means both are investing for the same amount of time. Say profit sharing ratio will be 85,000 ratio 15,000. ये cancel out हुआ. 3 times 17 times 17 ratio. ये बताइए क्या होगा. ABC invested 6,300, 4,200 and 10,500 for a period of 2 years. So time period of investment for everybody is same. So their profit sharing ratio will be their initial investment ratio. अब इसको सॉल्व करिए. 3 से जाएगा 21 टाइम्स, 3 से जाएगा 14 टाइम्स और 3 से जाएगा 35 टाइम्स. 7 से जा सकता है 7 3 7 2 7 5. So their investment ratio is 3:2:5.
What does this mean? This will also be their profit sharing ratio. So what does this mean? That when my total profit was 3 plus 2 plus 5, 10 rupees, because sum of all the variables of a ratio is always equals to total. So if total will be 3 plus 2 plus 5, that is 10. So if my total profit was 10 rupees, at that time profit received by A was 3 rupees. Right now total profit is 12100. So profit received by A will be X. Solve करिए. The value of X will be 1210 into 3. कितना हुआ? 3630. See, A, B, C, D enter into a partnership. A subscribe 1/3 of the capital. B subscribe 1/4 of the capital and C subscribes 1/5 of the capital. तो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? 1/3, 1/4 और 1/5 का LCM ले लीजिए. मतलब एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 1/3 से भी डिविजिबल हो, 1/4 से भी डिविजिबल हो, 1/5 से भी डिविजिबल हो. क्या हो सकता है? 60. तो हमने मान लिया कि मान लो टोटल कैपिटल है 6000, लेकिन उसमें फिर डी के लिए कोई शेयर बचेगा? चेक कर लेते हैं. डी के लिए कोई शेयर बचेगा? तो देखिए अगर 1/3 आपने लिया इसका तो कितना हुआ? 2000. फिर 1/4 आपने लिया इसका, कितना हुआ? 1500. 3500 चला गया. और 1/5 जब आपने लिया इसका, कितना हुआ? 1200. बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा. राइट. सो टोटल कैपिटल इज 6000. राइट. And now 6 out of 6000, if A subscribe 1/3, so A subscribe how much? 1/3 of 6000, that is 2000. B subscribes 1/4 of 6000, that is how much? 1500. And C subscribes 1/5 of 6000, that is 1200. और बाकी बचा कौन सब्सक्राइब कर रहा है? D. तो बाकी कितना बचा? इसको ऐड कर लीजिए. कितना होता है? 4700. कितना बचा? 1300. तो D subscribes 1300. द रेस्ट. यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने क्या किया? टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर का मल्टीपल ले लिया. कितना हो गया? राइट. 6000. ठीक है. आप चाहे तो 60 रुपीज भी ले सकते थे, लेकिन 60 रुपीज वो फिर कहीं पे डेसिमल में वैल्यू अगर चली जाती, कंफ्यूजन हो जाता तो दिक्कत हो जाती. तो 60 इसलिए नहीं, 6000 ले ली. ठीक है. आप चाहें तो 600 भी ले सकते हैं. तो 200, 150, 120 ऐसे बन जाएगी वैल्यू. ठीक है. अब आपसे पूछा हाउ मच डिड ए गेट आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ सी. एज इन्वेस्टमेंट इज 2000, बी's इन्वेस्टमेंट इज 1500, सी's इन्वेस्टमेंट इज 1200 and D's investment is 1300. So this will be their ratio of their investment and this will also be the ratio of their this will also be the ratio of their profit sharing. तो इसको सॉल्व करिए. कितना आता है? 20 ratio, 15 ratio, 12 ratio, 13. What does this mean? This is also their profit sharing ratio. What does this mean? कि when my total profit was 20 plus 15 plus 12 plus 13, ये हो गया 25, 25, 40, 40, 60. So when my total profit was 60, the profit received by A was 20. When my total profit was 60, the profit received by A was 20. Right now total profit is 2460. Profit received by A will be X. तो सॉल्व कर लीजिए. 41 टाइम्स आएगा. 41 इंटू 2 20 कितना होता है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.